हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यदि आपके हॉरोस्कोप में आपका चंद्रमा 4 नंबर में विराजमान है तो आप कर्क राशि के हुए यू आर कैंसेरियन एंड हेंस दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर यू। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव के बारे में और 2025 जनरली कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ आपसे वार्तालाप करूंगा। कर्क राशि कैंसर एक मूवेबल साइन है, एक फीमेल साइन है और एक वाटरी साइन है। Because it is a watery sign, and water, when put in a tumbler or in a glass, it takes the shape of that tumbler, it takes the shape of that glass, and hence कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से अडेप्टेबल होते हैं बिकॉज दे कैन फेमिलराइज देमसेल्स विद द एनवायरनमेंट दे स्टूप इनटू। तो ये एक अच्छी बात है। इस राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हैं और चंद्रमा आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड बिकॉज आपका चित्त कैसा रहेगा, आपका मन कैसा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा, ये कर्क राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा आपको मालूम है कि 27 दिनों में 27 नक्षत्रों में ट्रैवल करता है एंड हेंस इट मे ब्रिंग वेरिएशन इन मूड। तो जो कर्क राशि के लोग होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं और इनसे अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा हो, इनसेंसिटिव तरीके से कहा हो, तो ये इनको बहुत वर्षों तक ये बात याद रहती है। और अगर किसी ने इनकी तरफ इनके प्रति कोई अच्छाई दिखाई हो, कुछ अच्छी बातें इनसे की हों, तो वो भी इनको बहुत वर्षों तक याद रहती हैं। इस राशि में जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। और जो नीच के प्लैनेट हैं यहाँ पे मंगल हैं, मार्स हैं, वो इस राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच के मंगल के रिज़ल्ट बहुत कोई अच्छे नहीं होते हैं। वो भाइयों के साथ लड़ाई, खून की बीमारियाँ, स्मॉल एक्सीडेंट्स, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, हाई डब्ल्यूबीसी, लो आरबीसी, ये सब करवा देती है। कर्क राशि एक मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8, 12 ये हमारे 3 मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये हमारे 3 मोक्ष त्रिकोण हैं और दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द मोक्ष त्रिकोण्स। जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं कर्क राशि के लिए वो हैं मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न। बिकॉज इनका जो लॉर्ड है वो मून है और मून और मरकरी और मून और सैटर्न के साथ कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई मित्रता नहीं है। कर्क राशि हमारे चेस्ट का, हमारे छाती का एक रिप्रेजेंटेशन है काल पुरुष में। इसलिए आप देखेंगे कि कर्क राशि के लोग अक्सर खांसी, जुकाम, सर्दी, चेस्ट का कंजेशन, बलगम, ये सब चीज़ों से परेशान रहते हैं। इसलिए दे मस्ट कवर दिस पार्ट ऑफ द बॉडी प्रॉपरली इफ़ इट इज़ विंटर्स और इफ़ देयर इज़ अ चेंज ऑफ वेदर। इस बात का उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। कर्क के जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु हैं, पुष्य है, अश्लेषा है। एंड कर्क राशि पीपल जनरली हैव अ वेरी प्लेजेंट फेस, दे हैव लस्ट्रस आइज, they have a taste of good women, they have very high wisdom, they may get influenced easily by by women and by the charm of the women. Kark Rashi people, they are extremely fond of water sports and water. If you ask them to choose for a holiday between a mountain or a water destination, 100% Kark Rashi will say instantaneously yes for a water destination. Why? Because this is a water sign. They are quite charitable in nature, and generally the life of a Kark Rashi person is such that it is intermittent with rise and fall, honor and dishonor. Why? Because moon may be waxing or waning periodically, so it has to give the results of little bit rise, little bit fall. The life is not consistent, it's not constant because the mind is always traveling through different uh, periods of waxing and the waning periods of the moon. They easily familiarize, and this is a very unique proposition with Kark Rashi people, that they easily familiarize with the heroes and the heroines on the 70 screen, in theaters, in films, and they identify their own personality with such heroes because they may find certain traits in that hero with which they will be able to relate themselves very closely. So, for example, Kark Rashi female may say that I like Amir Khan because of such traits, and those traits may also be present in her, or those traits will be highly appreciable by her. So they easily familiarize or identify themselves with certain film actors, film actresses, or theater people.
They're quite inclined towards that. They are capable of selling old wine in a new bottle. They are highly creative people. People with Kark Rashi, I normally suggest them to go in the fields of advertising, where you use creativity at its best, in the fields of journalism, in the fields of content writing, in the fields of drama, theater, where expressions is required, state of mind is required, great counselors. So Kark Rashi people, they should use uh, their time in enabling their skills in these professions which I've listed you out. They'll be highly successful. They are very sensitive, but at the same time irritable. They normally get into fights with their elder brothers and sisters, and they normally also get into hardships because of their children, because erratic mood of others will also make them erratic, and this is a problem with them. If you have a Kark Rashi friend, you should be speaking very, very sensitively to that person, because he may mind of what you say, even if your intent is good. So, your speech and communication towards a Kark Rashi person has to be very watchful. So, these were some of the traits of Kark Rashi. It's a water element, and the Badhak Rashi for Kark Rashi is Taurus. So maybe you may find little bit of enmity between the Kark Rashi and the Vrishab Rashi people. So they often don't get along very well unless the planetary positions are very pleasant. So let us now come on the how 2025 is going to be. Numerologically speaking, 2025 is a year of Mars. And now Kark Rashi is currently running towards the end of the Shani Daya. 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी। जो पिछले आपके 2 ढाई साल गए हैं वो थोड़े से टर्बुलेंट गए हैं। द स्टेट ऑफ माइंड हैज़ नॉट बीन वेरी प्लेजेंट। सो